Hello guys, I am Shubham from ShubhVed Tutorials. From this video, we are starting with the metabolism. Okay, so carbohydrate metabolism is the first important thing we have to know. So glycolysis is the first pathway. Okay, before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new videos out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. So in the first video of biochemistry, it is about introduction. I have explained what is metabolism. Okay, so before starting with this, please watch that video. Right, I will add that in the I button. So carbohydrate metabolism, basically glucose metabolism, is basically like a foundation to all the other metabolism of biomolecules. Right, means it is a linking to other pathways. Okay, अगर ये अच्छे से समझा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, देन जो दूसरे मेटाबॉलिज्म के पाथवेज है वो भी इजी हो जाते हैं. ओके, टू अंडरस्टैंड. सो glycolysis is basically what this contains of two words. Glyco is glucose, right, and lysis is breakdown. Okay, breakdown. So whenever lysis ये term encounter होगा, right, बहुत pathways है. So lysis means breakdown of that particular बायोमोलिक्यूल. ओके, अभी और एक टर्म है दैट इज जेनेसिस. ओके, जेनेसिस इज सिंथेसिस, राइट, सिंथेसिस. lysis ये breakdown and genesis is synthesis. So you will encounter these major words in the biochemistry. Metabolism basically. Now this location of glycolysis is the cytosol. Okay, cytosol. And glycolysis have two phases. First is preparatory phase. Okay, where ATP is consumed, right? And second phase is payoff phase. Where ATP is produced. Got it? So exactly what is glycolysis? Oxidation of glucose. And इसमें 10 reactions है, right? 10 reactions. 5 reactions in the phase 1 and 5 reactions in the phase 2. Okay. So now let's see the pathway. First is a preparatory phase, right? Phosphorylation of glucose and its conversion to glyceraldehyde 3-phosphate. अभी ये ग्लाइकोलिसिस है, ये हमने बहुत बार एनकाउंटर किया है फ्रॉम द कॉलेज लेवल, राइट, +2. So this is major pathway. Okay, important है बहुत. So first is glucose getting phosphorylated to glucose 6-phosphate. Okay, hexokinase enzyme. Kinase stands for phosphorylation. Okay, और ये phosphate कहाँ से आएगा? ATP से आएगा. This is how ATP is used, right? So glucose 6-phosphate. अभी glucose 6-phosphate का phosphohexose isomerase, right? Isomerase will do the isomerization. The product is fructose 6-phosphate. Isomerization हुआ.
ग्लूकोज का to fructose. Then the next reaction where one more phosphate is added. Okay, from the ATP, phosphofructokinase 1. Okay, phosphofructokinase 1. Enzymes are very important, you have to remember each and everything that I am telling you. Product is fructose 1,6-bisphosphate. So this numbering is what? A location of phosphate. Okay, where the phosphate is getting added. Then fructose 1,6-bisphosphate का cleavage होगा. Okay, cleavage by the enzyme aldolase, right? Aldolase to glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Okay, glyceraldehyde 3-phosphate you can remember as GAP, right? Glyceraldehyde 3-phosphate or 3-PGAL, phosphoglyceraldehyde. Okay, phosphoglyceraldehyde. 3 is the location of phosphate. So you can see ये जो reaction है ATP के reactions, first reaction and third reaction, these are priming reactions. First and second priming reaction respectively. And जो cleavage है that is 6 carbon compound, right? जो fructose है वो 6 carbon का compound है, तो 6 carbon का cleavage हो रहा है to the 2-3 carbon sugar phosphates. Okay, 3-3 carbon separate हो रहे हैं. This is about the preparatory phase. तो अभी जो होगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का again isomerization, triose phosphate isomerase. Okay, triose why? Because 3 carbon, right? 3 carbon है तो triose phosphate isomerase. Isomerization से glyceraldehyde 3-phosphate pathway को continue करेगा. Okay, so here the payoff phase starts. So basically glyceraldehyde 3-phosphate and डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate बनेगा. तो ये जो मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट दैट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द पाथवे. गॉट इट? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट को यू कैन रिमेंबर एज ढाप, DHAP, ढाप, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. Okay, so let's see now payoff phase. What is basically payoff phase? Oxidative conversion of glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, conversion हो रहा है oxidation to pyruvate and the coupled formation of ATP and NADH, right? ATP and NADH का formation हो रहा है. So here 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate continue the cycle. क्या होगा इसका अभी? Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Okay, dehydrogenase is what? This is basically oxidation reduction cycle. Okay, I am giving you tips here. Just remember dehydrogenase ये जब भी इन्वॉल्व होता है ना, so that is basically oxidation and reduction reaction, right? Redox reaction भी बोल सकते हैं, because reduction oxidation simultaneously होता है. एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा. So this is a cycle basically. So here for that reaction NAD is used. Okay, NAD का NADH हुआ, right? So the H is getting removed and it is going to NAD. Got it? So यहाँ से सब 2-2 molecules है. So after that what happens? Product forms 1,3-bisphosphoglycerate. Okay, 1,3-bisphosphoglycerate, BPG, right? BPG, bisphosphoglycerate. So you can see यार phosphate भी add हो रहा है inorganic phosphate से. Okay, inorganic phosphate से. So we don't require kinase here. Kinase का काम है ATP से phosphate को join करना.
So here the phosphate is getting added, that is inorganic phosphate. This is a oxidation and phosphorylation reaction. Got it? Then ये BPG जो मिक्स फॉस्फोराइल है उसका फॉस्फेट है अभी वो रिमूव होता है. Okay, removal of phosphate by enzyme phosphoglycerate kinase. Okay, phosphoglycerate kinase मतलब ये फॉस्फेट रिमूव होगा एंड ADP के पास जाएगा. Okay, the phosphate is taken by ADP and it then forms ATP. So here the ATP formation takes place. Okay, so this is the first ATP forming reaction. Substrate level phosphorylation इसे बोलते हैं. Very important, you have to remember. Okay, जो ATP बनता है pathway में in the payoff phase, that is known as substrate level phosphorylation. Then जो product यहाँ पे बनेगा that is 3-phosphoglycerate. Simple, because ये 1 जो है वो रिमूव हुआ, थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट है. Then next enzyme in action, phosphoglycerate mutase. Okay, mutase basically क्या करेगा, mutation from the name. तो ये mutation on the gene level नहीं है, this is a change in a molecule. What change exactly? जो phosphate 3 पोजीशन पे था वो अभी 2 पोजीशन पे गया. Okay, so this is a mutation, right? 3-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate फॉर्म हुआ by the mutase enzyme. Then जो phosphoglycerate है उसका इनोलेज एंजाइम से phosphoenol pyruvate बनेगा. Okay, so enolase is what? Enolase is performing a dehydration reaction, right? Removal of water. You can see H2O is out. So this is dehydration. Means what? Removal of water. Got it? So 2-phosphoenol pyruvate से अभी last enzyme जो है that is pyruvate kinase. Again जो ATP kinase means what? Phosphorylation करेगा, but ADP का phosphorylation कर रहा है to form ATP. तो ये जो phosphate group था that is getting removed now completely. Okay, so that phosphate is going to ADP again to form ATP, and this is a second ATP forming reaction. Again substrate level phosphorylation इसे बोलते हैं. Got it? Very important. So the last product is pyruvate, right? Pyruvate. So this is a whole pathway you have to remember. Okay, now here same things are written, you just go through this picture. So let's see the mathematics now. जो एनर्जी है उसका हम एक कैलकुलेशन करेंगे. देन जो फर्स्ट फेज है उसमें 2 ATPs are consumed. Okay, 2 ATPs are consumed, and in the second phase 4 ATPs are produced, right? 4 ATPs are produced. इसीलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. तो नेट गेन यहाँ पे क्या है? 2 ATP. This is a net gain. Okay, then 2 NADH है, right ना? 1 NADH, I will write here 1 NADH is equal to 2.5 ATP. Okay, so यहाँ पे 2 NADH है, that is equal to 5 ATP, right? So total ATP from this glycolysis is 7 ATP. 7 ATP molecule produced by one cycle of glycolysis. Okay,
So this is again you have to remember. तो यहाँ पे और एक पिक्चर यहाँ पे मैंने ऐड किया है. Why this is important? Because not only enzymes work, but they also required cofactor or coenzymes like magnesium 2 plus. तो इस पिक्चर से just check करो when the Mg2 plus is used. So it is here, right? Then it is here again, here. Here Mg2 plus and potassium is also there. Okay, so there are additional factors required, cofactors for the proper functioning of enzyme. जो हमने एंजाइम के वीडियो में डिस्कस किया है. So now let's see the regulation of glycolysis. Okay, regulation of glycolysis. Regulation is also very important. So all the things that are asked continuously, repeatedly in exams that I am highlighting here. Okay, so just be careful and note down the things properly. जो ये 3 reactions है, where you will not see the reversible arrow. Okay, that is the reaction number 1. Here, reaction number 1, irreversible. Then this third reaction, okay, irreversible है. And the last reaction, 10th reaction, irreversible है. So these reactions which are irreversible are important for the regulation. Okay, I will write here reaction 1, reaction 3 and reaction 10. These are rate limiting. Okay, important for regulation. Got it? जो फर्स्ट है उसमें एंजाइम है हेक्सोकाइनेज. जो थर्ड रिएक्शन है उसमें है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, PFK1. एंड जो 10 है दैट इज पायरुवेट काइनेज. ओके, अभी क्या होगा, जस्ट रिमेंबर, जो ग्रीन है ना, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो पाथवे को इनिबिट करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे पाथवे को. तो दिस पॉजिटिव मीन्स पाथवे को प्रोसीड करेंगे, इनहेंस करेंगे, राइट. AMP will make the glycolysis to proceed. Okay, AMP is a positive regulator and जो ATP है that is a negative regulator, inhibitor है. Got it? See, main glycolysis का काम क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना, बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करना. तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP as we saw, right? So अगर ATP is already produced, ATP ऑलरेडी अगर बॉडी में हाई है तो ग्लाइकोलिसिस इज इनिबिटेड. फिर जरूरत ही नहीं है ना ग्लाइकोलिसिस का पाथवे चलाने की. इट इज लॉजिकल बिकॉज ATP इज ऑलरेडी देयर. एनर्जी अगर बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, देन व्हाई देयर इज नीड टू कंटिन्यू द ग्लाइकोलिसिस. So when ATP is there, no glycolysis, and when there is no ATP, glycolysis will proceed. Okay, ये important है. One more thing, so this is for all 3 enzymes, right? So next important thing है
दैट इज इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, लाइक फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये इस एंजाइम को इनिबिट करेगा, राइट। सो अगेन माइनस साइन विच इज नेगेटिव रेगुलेशन। तो इस एंजाइम को इनिबिट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जो प्रोडक्ट्स है वो इनिबिटर होते हैं, वी नो दिस। तो इसका भी इनिबिटर होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इनिबिटर है, नेगेटिव रेगुलेशन। पायरुवेट काइनेस का पायरुवेट इनिबिटर होगा। ओके, एंड जो इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, दैट विल बी एएमपी, तो ऑलरेडी डिस्कस किया। फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेस के लिए एक है पॉजिटिव फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ओके, 2,6 बिसफॉस्फेट ये पॉजिटिव रेगुलेट करता है इस एंजाइम को। और एक इनिबिटर है यहाँ पे सिट्रेट, सिट्रेट इज ऑल्सो इनिबिटर, राइट। अभी ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हम पाथवेज पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल, राइट, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट। तो उसका जो प्रोडक्ट है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस को इनिबिट करेगा। ओके, बिकॉज दैट इज कंटिन्यूड। तो दिस विल, अगर सिट्रेट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है तो ये एंजाइम इनिबिट होगा। एज वेल एज पायरुवेट काइनेज में एसिटाइल कोए, राइट, एसिटाइल कोए ये भी इम्पोर्टेंट है टू कंटिन्यू द पाथवेज। ओके, तो ये भी इनिबिट करेगा इस पाथवे को, राइट। अगर प्रोड्यूस्ड है एसिटाइल कोए ऑलरेडी, it is in high amounts, then pyruvate kinase will be inhibited and glycolysis will be stopped. Okay, और एक है यहाँ पे एलानाइन। एलानाइन इज अमीनो एसिड, पायरुवेट से एलानाइन बनता है। तो इफ एलानाइन इज फॉर्म्ड, ये एंजाइम इनिबिट होगा। गॉट इट? so just remember these things, these are the inhibitors and मतलब molecules which are important for regulation, positive regulation, negative regulation, inhibitors बोल सकते हैं, right, और promoters। ओके, दिस एटीपी एएमपी का पिक्चर तो कॉमन होगा तीनों एंजाइम के लिए, दैट इज व्हाई आई हैव रोटेड सेपरेटली, जस्ट नोट डाउन। दिस इज अ फेट ऑफ पायरुवेट। बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस है दैट कैन ऑकर इन एरोबिक एंड अनएरोबिक फॉर्म्स। ओके, अनएरोबिक में जो होता है दैट इज absence of oxygen, absence of oxygen, and aerobic में there is presence of oxygen. So anaerobic is basically called fermentation. Got it? Fermentation. So you can see here, ये जो पूरा पाथवे दिया है ना यहाँ पे स्ट्रेट, दैट इज एरोबिक, राइट। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट है 4CO2 plus H2O, ग्लूकोज टू पायरुवेट, पायरुवेट then acetyl CoA, and last 4 carbon dioxide and water. I will just make the arrow this side. Okay. अभी अनएरोबिक कंडीशन में, अंडर अनएरोबिक कंडीशन, glycolysis stops until NAD plus can be replenished by fermentation. Okay, ये जो fermentation का पाथवे है in the anaerobic condition that regenerates NAD plus. Okay, in the glycolysis जो हमने देखा अभी एरोबिक वाला केस जिसमें NADH बनता है, but during this fermentation process NADH से फिर से NAD बनेगा। Okay, so this is very important, you have to remember. See, regeneration, I will highlight the word here, regeneration of NAD plus from NADH under anaerobic conditions. Sorry, that is aerobic conditions. Regeneration of NAD plus from
from NADH. Okay, बाकी का just we will read. Aerobic conditions में pyruvate is activated to acetyl CoA and is completely oxidized to CO2 and water through the citric acid cycle, that is Krebs cycle, and mitochondrial oxidative phosphorylation. NADH produced in the pathway is oxidized to NAD plus through mitochondrial electron transfer. But under anaerobic condition, pyruvate reduction to lactate or ethanol is required to produce the NAD needed for glycolysis to continue. ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए NAD का रीजनरेशन होना इंपॉर्टेंट है. Pyruvate also serve as a precursor in many anabolic reactions not shown here. Okay, so this you have to remember. जो fermentation processes है, first is lactic acid fermentation, second ethanol fermentation, उसमें NAD plus का regeneration होता है, right? Same यहाँ पर भी same दिया है. See, glucose to pyruvate जो हमने देखा अभी, that is common, right? That is common. But ये pyruvate का एरोबिक से CO2 H2O बनेगा. ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल वेयर NAD प्लस फॉर्म्स NADH. ओके, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हम देखेंगे राइट इन द कमिंग वीडियोस. जो सेकंड पाथवे है दैट इज होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन वेयर पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टेट. ओके, NAD प्लस का रीजनरेशन हो रहा है. सेम ईयर इथेनॉल फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसे बोलते हैं. इसमें अगेन NAD प्लस का रीजनरेशन हो रहा है फ्रॉम NADH. ओके, एंड एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल एंड CO2. ओके, so same is written, you can read by your side. Now let's see the specific fermentation pathways, reactions. So this is basically lactic acid fermentation reaction. So here pyruvate NADH, enzyme is lactate dehydrogenase. Okay, dehydrogenase we know जो हाइड्रोजन से खेलता है, राइट? वी कैन रिमेम्बर दैट हाइड्रोजन से खेलता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन. तो यार NADH का NAD हो रहा है एंड जो H है यहाँ पे पायरुवेट के मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो रहा है, गिविंग राइज टू लैक्टेट. ओके, नथिंग यू हैव टू रिमेम्बर दिस. NAD प्लस का रीजनरेशन यहाँ पे हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ साइकिल शोन. तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पायरुवेट बनता है, तब NAD से NADH बनता है. एंड व्हेन पायरुवेट से लैक्टेज बनेगा, लैक्टेट, दैट टाइम NADH से NAD. So this is a cycle. So here you have to remember this word, very important. This is asked in exams. Regeneration of NAD plus. This is about ethanol fermentation. The production of alcohols is done by this. This is used in food industry, right? Yeast, basically yeast. This is seen in yeast. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, right? And ये जो हमने देखा, this is seen in muscle cells. Okay, muscles, RBCs. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है? Two reactions are there. First reaction, pyruvate to acetaldehyde. Okay, enzyme is pyruvate decarboxylase. Decarboxylase means removal of carbon dioxide. Okay, carboxyl group remove होगा. Okay, removal of CO2. Next reaction is acetaldehyde getting converted to ethanol. Okay, यहाँ पे NADH का NAD plus.
by the enzyme alcohol dehydrogenase. You can see यहाँ पे cofactors भी लगते हैं pyruvate decarboxylase को, TPP and magnesium 2 plus. Okay, TPP is thiamine pyrophosphate, right? So that is why I have added two pictures to understand and make you guys clear. Okay, here you can see Anedica regeneration. Till now we saw about glucose, but what about other sugars? Okay, so this slide is about other sugars. Okay, so like lactose, but lactose में disaccharide है lactose, glucose and galactose है. So glucose as we saw pathway में आएगा, but galactose का यहाँ पे conversion होता है to glucose 1 phosphate. Okay, same here with other sugars. I will highlight the important one like sucrose. This is also common. Sucrose enzyme sucrase है, lactose का enzyme lactase है, right? Sucrase से glucose and fructose बनता है. So as we know glucose तो pathway में आएगा, fructose भी pathway में आएगा as the fructose 6 phosphate, and then pathway will continue. Okay, you can check with other sugars. Just I have added to show you guys. Okay, so that's it for this video. I hope that this video helps you. If you find it helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.